Welcome back to Florencenova. In the previous lecture, we discussed the concept of health and disease. In today's lecture, we will understand the concept of illness, its meaning, different models, and importance examples. This topic is very important for B.Sc Nursing, GNM, ANM, and competitive nursing exam. वीडियो को एंड तक देखना है एंड एंड में दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं आप लोगों ने. ओके, लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस. Okay, next is concept of illness. Concept of illness is first definition. Illness is the inability of an individual's adaptive response to maintain physical and emotional balance that result in impairment of functional abilities. मीन्स इलनेस क्या है? जब एक इंडिविजुअल कैपेबल नहीं है अपने डेली लिविंग जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको बैलेंस करने में. मीन्स इमोशनल एंड उसका फिजिकल बैलेंसिंग नहीं हो रहा है. की पॉइंट्स: हाईली पर्सनल स्टेट मीन्स फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज डिमनिश. सब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स परसेप्शंस एंड बिहेवियर. मीन्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशंस में कौन कितना इलनेस फील कर रहा है. नॉट सेम एज डिजीज, वन कैन बी इल विदाउट डिजीज एंड वाइस वर्सा. मीन्स इलनेस एंड डिजीज सिमिलर थिंग्स नहीं है. डिजीज सेपरेट है जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, एंड इलनेस इज जो रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशंस और ऑनसेट, first is acute illness. Onset sudden and abrupt, duration short period, symptoms severe and intense form, and courses often subside, return to normal level of wellness. For example, common cold, appendicitis, food poisoning, etc. Chronic illness, onset slow रहेगा, durations persist greater than 6 months, can be lifelong. Courses after functioning in anhedonous features long-term disease process, for example diabetes, hypertension, etc. Next, terminal illness. A terminal illness is an infectious or disease which is considered ultimately fatal or incurable. की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट इज कंसिडरेबल टू हैव टर्मिनल इलनेस इफ लाइकली टू डाई डिस्पाइट डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, and some peoples may live for years with medical support. For example, advanced cancer and stage 8 and stage organ failure, etc. Nursing considerations: diagnosis is traumatic for patient and families, required psychological counselings and emotional support, and focus shift to palliative cares. Next, stages of illness. According to such man's models, stage first, symptoms experience, feel something is wrong, experience physical symptoms, emotional response, try home remedies. Stage second, assumptions of sick role, मीन्स वो अज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, एक्सेप्ट बीइंग सिक, कि खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है कि बीमार है. सिक कन्फर्मेशंस फ्रॉम फैमिली, अदर पर्सन उसको बोलेंगे कि हाँ आप बीमार लग रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फीवर है या जो भी है वो कंफर्म कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स. एक्सक्यूज फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटीज़, देन वो एक्सक्यूज करना स्टार्ट कर देता है, अपनी नॉर्मल ड्यूटीज से खुद को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है. सिक प्रोफेशनल्स हेल्प. नेक्स्ट आपका स्टेज थर्ड, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, यानी कि जब वो कंफर्म हो जाता है, अज्यूम हो जाता है सिक रोल के अंदर, देन वो मेडिकल केयर लेना स्टार्ट करता है. कंसल्ट हेल्थ प्रोफेशनल, मीन्स फिजिशियन के साथ कंसल्ट करेगा. एंड वांट वैलिडेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस, मीन्स वो चाहता है उसको वैलिडेट करना, कंफर्म करना उस डिजीज़ को. एंड देन सीक रीअश्योरेंस में एक्सेप्ट एंड डिनाई, एंड सीक करता है, रीअश्योर कराता है उस डिजीज़ को, वो एक्सेप्ट करेगा या फिर उस डिजीज़ के रिगार्डिंग डिनाई करेगा. देन स्टेज फोर्थ होता है डिपेंडेंट क्लाइंट रोल, become dependent on professionals and follow treatment plan. मीन्स वो डिपेंड करेगा कि पर्सन के ऊपर कि वो प्रोफेशनली उसको ट्रीट कर रहा है, फॉलो कर रहा है ट्रीटमेंट प्लान को या नहीं. एंड लास्ट स्टेज है स्टेज फिफ्थ, रिकवरी या रिहेबिलिटेशंस.
मीन्स अगर स्मॉल फॉर्म का इलनेस था तो रिकवरी फॉर्म हो जाता है उसका, क्रॉनिक स्टेज है उसका तो रिहेबिलिटेशंस मीन्स टाइम ड्यूरेशंस उसको लगेगा उस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट, यानी कि पेशेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या असर आता है हमारी इलनेस का। तो फर्स्ट इज बिहेवियर एंड इमोशनल चेंज, फॉर एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशंस, एंगर या विड्रॉल। सेकंड इज लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर डेली एक्टिविटीज, कि इलनेस हुआ है तो डिपेंड हो जाता है वो अदर पर्सनस के ऊपर। थर्ड इज सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड बॉडी इमेज चेंज, कि ड्यू टू सर्जरी, स्कार, वेट लॉस, डिसेबिलिटीज सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ इज लाइफ स्टाइल चेंज, डाइट, वर्क, सोशल एक्टिविटीज, रूटीन चेंजेस। नेक्स्ट इज प्राइवेसी अफेक्टेड, मीन्स फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशंस उस पर्सन के होते हैं तो प्राइवेसी अफेक्टेड होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है comprehensive nursing care. Comprehensive nursing care is incorporated all aspect of health during nursing care of patient, especially psychic and social needs of patient. जैसे holistic approach, look beyond impairment to each person's potentials, teamwork, involve all disciplined physicians, nurse, psychologists, social workers, educators, clerks. Next is therapeutic partnership. Patient is an active members of the healthcare teams and goals is achieve a pre-disease levels. Next is 5 स्टेप्स के अंदर हमने यहाँ पे नर्सिंग असेसमेंट करना होता है। फर्स्ट इज असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस जो हमारा है, ये कंप्रेहेंसिव नर्सिंग केयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज असेसमेंट, डाटा कलेक्शन स्टेप, वाइटल साइन, had two examinations, listening to patient, observing reactions, ask about symptoms. Next step is diagnosis, identify patient health problems, then most patient have more than one problems, then prioritize based on severity and impact, then planning, set goals to improve patient outcomes, then identify expected outcomes based on assessment. Next is implementations, put plan into actions, then delegate responsibilities, then communications with health team is essentials, then evaluations, ongoing process होती है हमारी, analyze success, failure of goals, then examine need for adjustment. ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स, पेशेंट एंड फैमिली इन केयर ऑफ अडल्ट पेशेंट, कि हमारी रोल ऑफ नर्स क्या होती है, रोल ऑफ पेशेंट क्या होते हैं, या रोल ऑफ फैमिली हमारी क्या रहती है एक अडल्ट पेशेंट की केयर को प्रोवाइड करने के लिए। रोल ऑफ नर्स की अगर हम बात करें तो फोकस्ड होता है हमारा, पेशेंट सेंटर्ड केयर वो प्रोवाइड करती है हमारी, टीम वर्क के साथ हमारी पेशेंट के केयर प्रोवाइड करता है। मेन कॉन्टैक्ट, प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पेशेंट एंड फैमिलीज, thus expanding role conducting nursing cares. Function of a nurse, provide health education to patient and family, prepare care plan and oversee patient progress, assess adult patient vital sign physical examinations, then administer drugs, injections, blood transfusions, IV drip, then provide basic care, hygiene, bed making, comfort measures, assess psychological needs of a patient and family. ओके, नेक्स्ट है टिपिकल वर्क एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंटेशंस है आपका, इम्प्लीमेंटेशंस, मॉनिटरिंग, वाइटल साइन है, मेडिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, प्रोसीजर्स, असिस्टेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। की रोल्स, इमरजेंसी केयर, डिस्चार्ज प्लानिंग परफॉर्म करता है, कम्युनिकेशंस है, पेशेंट एडवोकेट, लाइसेंस, देन डिसीजंस मेकिंग, health educations, then management, and then monitoring the patient, and documentations and ethics. Role of family in adult patient care. Role of family क्या रहेगा, family members are equal members of the healthcare teams. They provide fresh perspectives and help patient focus on what is truly important. Three की फैक्टर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे क्या है, इफेक्ट ऑफ फैमिली स्ट्रेस, द नीड ऑफ फैमिली एज केयर गिवर,
and how family cope with patient illness experience. कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहेगा हमारी फैमिली का, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस की रिलायबल डाटा जो रहेगा हमारा पेशेंट का वो हमारी फैमिली ही प्रोवाइड करती है. इन्फॉर्मेंट गिव इंफॉर्मेशंस व्हेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस, एडिक्ट और मेंटली अनवेल. नेक्स्ट इज इमोशनल सपोर्ट, रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी, इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स. देन केयर प्रोवाइडर्स की वेल विशर्स हु हेल्प इन प्रोवाइडिंग केयर्स. एंड देन मोटिवेशंस कि पेशेंट को मोटिवेट करते हैं फैमिली मेम्बर्स. नेक्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ केयर्स प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट सेफ्टी, इमोशनल बॉन्ड, प्रिवेंट हार्म्स और इंजरी ड्यू टू untoward activities, the link between hospitals and community, then cope in terminal illness, help in enhance acceptance and coping, maintain hope, then social and emotional support. Roles and responsibility of nurse in medical surgical setting. First is outpatient department, कि ओपीडी है तो वहाँ पे हमारी नर्सेज का क्या रोल रहता है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, रिड्यूस वेटिंग टाइम्स फॉर रजिस्ट्रेशंस, कंसल्टेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस. सर्विसेज क्या होती हैं हमारी ओपीडी के अंदर, ईसीजी, प्लास्टर, इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, माइनर सर्जरीज, इंटरवेंशंस, physiotherapies, bronchoscopy, endoscopy, etc. Next, OPD department system modules, central registrations, appointment, receptions and inquiry help, billing and case management, management information system. Then inpatient department means IPD. IPD means patient is admitted to hospital for close monitoring during procedures and recovery. Keep and stay overnight or for several days or weeks, required close observations and continue nursing care. Then जैसे आपका सर्जरी पेशेंट है या सीरियसली इल पेशेंट या कोमा पेशेंट होते हैं तो उनको ओवरनाइट स्टे कराते हैं. OPD versus IPD. OPD comes from consultations. IPD means admitted in hospitals. OPD goes home same day, then IPD stay 24 hours or more. लेस मॉनिटरिंग, ओपीडी के अंदर लेस मॉनिटरिंग होती है, आईपीडी के अंदर कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करते हैं हम अपने पेशेंट को. माइनर प्रोसीजर्स ओपीडी बेसिस पर हो जाते हैं एंड मेजर ट्रीटमेंट, सर्जरीज एंड केयर्स आपका आईपीडी बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है. इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू is specialized sections of hospital with equipment, staff and monitoring devices to provide comprehensive and continued cares for critical ill patients. Other name critical care units, this CCU है आपका, intensive therapy unit, ITU, coronary care unit, CCU, sorry, where critical care is provided. सेंस ऑफ एक्सीडेंट्स कि एक्सीडेंट है, कोई ट्रॉमा है, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम है, ऑपरेटिंग रूम है, यहाँ पे आपका क्रिटिकल केयर प्रोवाइड की जाती है. की फीचर्स, टीम, मल्टी प्रोफेशनल टीम, फिजिशियंस, नर्सेज, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, pharmacists. Then technologies, highly sophisticated monitoring equipments, patient acute life-threatening illness or injuries, major surgeries या multi-organ failures or trauma. Admissions usually from emergency department या surgical area after stabilizations. Homes and community care services is complements and supplements, not replace family, friends and community efforts. टाइप ऑफ सर्विसेज क्या रहती है हमारी, होम हेल्थ केयर, नर्सिंग रिहेबिलिटेशन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, होम सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पैलेटिव या हॉस्पाइस केयर प्रोवाइड की जाएगी, कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, रेजिडेंशियल केयर वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे असिस्टिंग लिविंग है, रेजिडेंशियल केयर सर्विसेज हैं एंड केस मैनेजमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट, टू कैटेगरीज ऑफ होम केयर वर्कर्स, होम health aides and home care aides means personal care aides के फॉर्म पे. वर्क फॉर गवर्नमेंटेड एजेंसीज आपका होम हेल्थ एड्स के अंदर एंड होम केयर एड्स के अंदर वर्क फॉर प्राइवेट यानी कि पब्लिक एजेंसीज जो होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने स्टाफ नर्स अंडर सुपरविजन्स ऑफ रजिस्टर्ड नर्स या लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स. सुपरविजन्स लेस डायरेक्टेड. आपका होम हेल्थ एड्स गवर्नमेंट
प्रोवाइड सम हेल्थ केयर ड्यूटीज, एंड अगर आप होम केयर एड्स की बात करें तो फोकस मोर ऑन पर्सनल केयर्स, एंड अगर हम हेल्थ एड्स की बात करें तो चेक वाइटल्स, पल्स, बीपी, हार्ट रेट, एंड यहीं पे इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम फैमिली, कि फैमिली को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। थैंक यू। Now let's check your understanding with a quick MCQs. Pause the video, choose your answer, and then continue to see the correct answer. Okay. Illness is best defined as, right answer is option B. Next is, according to WHO, health is a state of, okay, correct answer is C. Next is, which dimensions of health deal with emotion and stress management? Right answer is B. Mental health. Next questions. The concept of illness is mainly based on, choose your answer. Which of following is an objective conditions? Comment your answer in comment sections. Okay. Which statement is true? Which healthcare professional should assess both disease and illness? Comment your answers in comment sections. Disease is defined as, today we learned the concept of illness, its definitions, illness versus disease, factor affecting illness, and it's important in nursing. Revise the MCQs and expected questions because they are frequently asked in university and competitive nursing exams. In the next lecture, we will continue with the remaining concept. And this is an important university exam questions. Please make a notes of it. Okay, thank you, बच्चे.